Hi everyone. Today we are going to discuss a very popular poem composed by John Milton. Before going into the detailed discussions of the poem, let me introduce John Milton. John Milton was a very famous and popular English poet just after William Shakespeare in England. He was born in 1608 and died in 1674. But meanwhile, a mishappening happened in his life, and he became blind at the age of 44. He published three main poetic works that he is popularly known for. The famous one, his epic Paradise Lost, then The Paradise Regained, and then The Sense and Agonistes. And today we are going to discuss his famous poem on his blindness. This is basically a sonnet. This is also not known as Miltonic Sonnet. Basically, it is written and it is composed, and the structure of this sonnet is a petrarchal one, or it is also known as Italian sonnet. It is a poem, a sonnet of 40 lines, but the structure is different. It is divided into two parts only, not like of Shakespearean's. And like Shakespearean sonnets were divided into three parts, three quatrains followed by heroic couplet. But it is divided into only two parts, 8 lines octave, and then it is followed by the 6-line sestet. Here you see the rhyming scheme of the poem: A B B A B B A A B B A C D E C D E. So dear friends, this poem is a kind of an expression of sorrow that he complains to God, John Milton, just after being blind at the age of 44 in 1652. So he speaks in first stanza. He just complains to God about the injustice he has done to him, but finally he consoles him that God does not do anything wrong and right to anybody, and he consoles that everything, whatever he does, that happens for the good. So here we go with the line by line explanation, and we'll also be discussing the critically we will be analyzing the poem. When I consider how my light is spent, basically it is an autobiographical poem, because he speaks his own experience, his own observations of life, that he feels that he had got a talent to write the poetry, but what happens when he becomes blind? So he says, when I consider means when I think that how my light means my eyesight, my eyes, how when I think how I have lost my eyes, कि जब मैं सोचता हूँ कि इस उम्र में मेरी आधी जिंदगी भी अभी पूरी नहीं हुई और किस तरह से मैंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है. When I consider how my light is spent at half my days. At means before half my days. Days here means life. मेरी जिंदगी पूरी होने से पहले ही मैंने अपनी eyesight खो दी. आधी जिंदगी पूरी होने से before my half of my age was past. So this is a kind of injustice to me. How can I continue such a big life of mine in this dark world and wide? Now how will I live in this dark world and wide? अब मैं इस तरह की इस अंधेरी दुनिया में जो इतनी बड़ी है, किस तरह से रहूंगा, खास तब जब मुझे बहुत कुछ लिखना था उस प्रतिभा के दम पर जो भगवान ने मुझे दी थी. और वो प्रतिभा क्या थी? Poetic talent. He was fully blessed with that poetic talent, through which or by which he could have written any masterpiece that would have been remembered for the centuries to come. He said, and that one talent, it's a biblical reference he has taken very smartly and very beautifully he has used. The talent of Matthew's, there is a reference in Bible, and he says the talent that God has given me, either he should have not taken my eyes back,
या तो उससे मुझे मेरी आंखों की रोशनी नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे अंधा नहीं बनाना चाहिए था, और अंधा बना लिया तो इस तरह की प्रतिभा नहीं देनी चाहिए थी जो मेरे अंदर कुम्हालन लगी है, जो उमड़ उमड़ के बाहर आनी चाहती है, लिखना चाहता हूं मैं। Which is death to hide, और जिसको मैं छुपा भी नहीं सकता, हाँ, उसको रोके रखना मौत के समान है। Means the talent of writing the poetry cannot be controlled and cannot be forcefully stopped, and if I try to stop it, it will be like a death. Means I cannot kill my emotions of writing because the God has blessed me fully the talent of writing. Death to hide, lodged with me useless. Now the talent is lying useless with me. I'm not able to make any use of that talent that God has given to me. मैं उस प्रतिभा का कोई भी प्रयोग नहीं कर पाना जो भगवान ने मुझे दी है, अर्थात लेखन की, अर्थात काव्य लेखन की, साहित्य लेखन की. Though my soul more bent, यद्यपि still I feel that my soul is bent towards God who made me to serve there with my maker. हालांकि, who is the maker? M is capital here. The maker is the God. He says, हालांकि इन सब परिस्थितियों के बाद भी मैं उस खुदा के उस हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं जो मुझसे काम करवाना चाहता है. इसलिए मैं उसकी सेवा भक्ति के लिए अपने खुदा, अपने निर्माता के प्रति अभी भी मैं नम्र हूं. मैं उसकी तरफ उसके आदेशों के पालन करने के लिए हर क्षण तत्पर हूं, तैयार हूं. मेकर एंड प्रेजेंट my true account last the returning child to serve there with my maker and present my true account, or I just want to disclose everything before him, that if you have given me the talent, I am really thankful to you, and I just want to give you my account that how much have I written, how much use of this talent have I done, कि इस जो प्रतिभा आपने मुझे दी है इसका मैंने इस्तेमाल किया है. इसका हर लेखा जो मैं आपके सामने दूं बिफोर, इससे पहले कहीं ऐसा नहीं कि आप मुझे डांटोगे कि जॉन मैंने तुम्हें ये सब कुछ, ये प्रतिभा दी थी, ये आशीष दिया था, तुमने इस आशीष का समय रहते क्या सदुपयोग किया है, नहीं किया. इसलिए वो कह रहे हैं my true account lest the returning child doth God exact day labor light denied. वो कहते हैं doth means does God exact day labor. क्या भगवान उस तरह के अंधों लोगों से भी उस तरह के आंख देखने वाले जैसे लोगों की तरह काम लेना चाहता है, जिनकी लाइट डिनाइड, जिनकी आंखों की रोशनी से आपने उनको वंचित कर दिए हैं. हु हैव जस्ट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम दिस टैलेंट ऑफ सीइंग दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड. इतनी खूबसूरत दुनिया में कहते हैं सबसे अगर खूबसूरत कोई चीज है वो आंखें हैं जो हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका देती है. लेकिन अफसोस कि जॉन मिल्टन के पास आज वो नहीं है. Does God exact day labor? क्या भगवान उनसे भी वो दिन का काम लेते हैं जिनकी आंखें चलेगी, अर्थात रोशनी में करने लायक जो काम है, अर्थात लिखने का, पढ़ने का, न वो सिर्फ हमारे तन की आंखें होनी चाहिए बल्कि वो आंखें जो हमारे मन की रोशनी से भी इस संसार को देखते हैं, इसके कष्टों को देखते हैं, इसके आनंदों का उत्सव मनाते हैं. क्या उस आंखों के बदले काम करने के भगवान ऐसा चाहता है कि हम भी उसी तरह का काम करें, हालांकि हमारे पास आंखें नहीं हैं. I fondly ask, I just being foolish, I ask this question. कहते मैं तो मूर्खतापूर्ण इस तरह का सवाल कर रहा हूं, but patience do prevent that murmur soon replies. लेकिन कह रहे जो मैं ये बुदबुदा रहा हूं, the way I am just murmuring, my patience of just rethinking, he starts introspecting. Why should God make me blind? भगवान को मुझे अंधा क्यों करना चाहिए था? What personal enmity he is just doing with me? कोई व्यक्तिगत नाराजगी, व्यक्तिगत दुश्मनाई भी भगवान की मुझसे नहीं. फिर वो अपने आप को धीरज, he is consoling himself, he is just introspecting and says, God doth not need any either man's work or his own gifts. He is omnipresent, God. He is omniscient. He is omnipotent. And he does not need any kind of service from any mankind. Because he is the maker of all. He is the boss of all. He is the master of all. So he does not need anybody to serve for him. And nor he needs any kind of gifts from his devotees or from his workers. He says, God doth not need, means God does not need. भगवान को आवश्यकता ही नहीं है. Either man's work or his own gifts. उसके तरह की कोई भी काम उससे अपेक्षा ही नहीं रखता है. Who best bear his mild yoke, they serve him best. Very beautiful line, and generally asked many times in examinations. He says, okay, that's good if those who work at the order of the God, at the bidding of the God. That's good.
But this is the best, that who follows him in every happiness, unhappiness, every bad days, good days, light days, dark days. God does not need any either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. जो उसके द्वारा दिए गए ये जुआ, एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो योग, माइल्ड योग, उनके द्वारा दिया गया ये श्रम जो भी वो देते किसी के लिए, बैलों के ऊपर जुआ रखा जाता ताकि बैल कंट्रोल रहें और खेती का काम करते रहें। तो और जब उनके ऊपर जुआ रख दिया जाता तो फिर एक ही धुन में पूरे खेत की जुताई करते रहे बिना किसी सवाल के। तो उसमें भगवान का आदेश हमारे लिए उस जीव की तरफ होने चाहिए जो उन्होंने अगर हमारे कंधे पर रख दिए। इफ ही हैज प्लेस्ड दैट वुडन फ्रेम ऑन आवर शोल्डर्स एंड नेक, वी हैव टू प्लो द फील्ड। हमको तो खेत जोतना ही जोतना है, उसमें अनाज हो या न हो, बट वी हैव टू डू आवर ऑन ड्यूटी। Bear his mild yoke, they serve him the best। वही लोग भगवान की सच्ची सेवा करते हैं जो उसके द्वारा दिए गए हर उस आज्ञा का पालन करते हैं, जो चाहे उन्हें पसंद हो या ना हो, whether they like it or not। His state is kingly। Oh my God, what question! Against whom am I raising finger? मैं किसके खिलाफ जो है उंगली उठा रहा हूं? अरे his state is kingly, वो तो देवों के देव हैं, वो तो राजा हैं, राजाओं के भी राजा हैं, और उनके खिलाफ मैं उंगली उठा रहा हूं। Is kingly, thousands at his bidding speed, and thousands of the workers, thousands of servants are at his service। हजारों लोग उसकी सर्विस पे हैं जो उनके एक कहने पर पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवरलैंड ओशन विदाउट रेस्ट, और जो पूरी दुनिया में बिना किसी विदाउट टेकिंग रेस्ट, बिना किसी आराम के उनके आदेश के पालन के लिए धरती और आकाश और पाताल को एक कर सकते हैं, ऐसे स्वामी भक्त उस भगवान के पास। और उससे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि तुमने मेरी आंखें क्यों छीन ली? Whatever happens, that happens for the good। And he says, and post over land and ocean without rest, और जो समंदर पार कर सकते हैं, धरती को नाप सकते हैं, आसमान को छू सकते हैं, ऐसे स्वामी भक्त सेवक उसके पास हैं जो बिना रुके हुए पूरी पृथ्वी का चक्कर उसके लिए लगा सकते हैं। They also serve who only stand wait, and not only this, only those people are not loved by the God who do the service for him, but also the people, they also serve who only stand and wait। Those people who also stand, who also wait only for the order and the bidding and the command of the God, they also serve in the best who only stand and wait। ऐसे लोग भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं जो कोई भी काम न करे लेकिन सिर्फ उसके आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहें, उसके आदेश की प्रतीक्षा करें। वो भी उसकी उतनी ही सेवा करते हैं जितना कि उसके आदेश को बिना आराम के पूरी दुनिया में पालन करने वाले लोग हों, उनसे भी बेहतर वो लोग सेवा कर सकते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो भी उसकी सेवा करते हैं। इसलिए मुझे भगवान की आज्ञा पर, उसके आदेश पर, उसके किए हुए कार्य पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है। बिकॉज वॉट एवर आई हैव रिटन, दैट आई हैव रिटन विद हिज इंस्पिरेशन, विद हिज मोटिवेशन, विद हिज ब्लेसिंग्स। जो कुछ भी अभी तक मैंने लिखा है, जो आगे भी लिखूंगा, मैं सिर्फ उसकी आज्ञा से लिखूंगा, उसके आशीर्वाद से लिखूंगा। और मुझे लगता है हे भगवान, सिर्फ मेरी अभी तो शरीर की तन रूपी आंखें गई हैं, लेकिन आपने जो मुझे काल्पनिक मन रूपी आंखें दी हैं, जो ये हुनर दिया आपने मुझे लिखने का, निश्चित तौर पर आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसको मैं और भी इस पोएटिक टैलेंट को, इस काव्य प्रतिभा के माध्यम से इस संसार की भलाई के लिए कुछ और भी जो मुझसे बन पड़ेगा उसको मैं लिखूंगा। थैंक यू वेरी मच।